Welcome back, dear students, to the video lecture series of RGPD Bhopal. We were discussing elementary phonetics in lecture 1 and we discussed the vowel sounds. Because this is the introductory and the elementary concept that is required to learn the skills of oral communication. So today we'll be dealing with the part 2 of elementary phonetics, and in this we'll be taking up the consonant sounds. Let's revise the organs of speech that we had studied in the lecture 1. The air from lungs passes through the windpipe or the trachea, and then the organs of speech that are involved in making sounds or in articulating the sounds are the velum or the soft palate and the hard palate, the alveolar ridge, the teeth, the lips, the tongue, and the nasal cavity. Sound is produced by the vibration of the vocal cords, and some sounds are voiced, which are produced with the vibration of the vocal cords. We call them voiced sounds, and those that are produced without the vibration of the vocal cords are called voiceless sounds. हिंदी की वर्णमाला बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हिंदी की वर्णमाला डिजाइन की गई है और उच्चारण के स्थान के अनुसार ही वर्ण विन्यास है या उसके जो वर्णों का अरेंजमेंट है वो उच्चारण के स्थान के हिसाब से ही बनाया गया है। कुछ वर्ण जो है वो कंठ से निकलते हैं, कुछ तालु से निकलते हैं, कुछ मूर्धा से निकलते हैं, कुछ दंत और ओष्ठ इनकी कॉम्बिनेशन से निकलते हैं, कुछ में आपकी जो जीभ है, जिह्वा या टंग, उसका मैकेनिज्म होता है मूवमेंट का। तो हिंदी की वर्णमाला का जो विन्यास है वो बहुत कुछ उच्चारण स्थान के अनुसार है। आप बोलते समय महसूस भी कर सकते हैं कि क, ख, ग, घ एक ही उच्चारण स्थान से निकलते हैं। च, छ, ज, झ इनके उच्चारण की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है और एक जैसे जो माउथ ऑर्गन्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्पीच ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसी तरह से ट, थ, ड, ढ तालु, त, थ, द, ध दांतों के पीछे से, प, फ, ब, भ, म ये होठों के मैकेनिज्म से आर्टिकुलेट किए जाते हैं या उच्चारण किया जाता है। लेकिन इंग्लिश में आपका ABCD जो आप अल्फाबेट में पढ़ते हैं उसका मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंसिएशन से कोई उसका सामंजस्य नहीं है। बट द साउंड्स इन फोनेटिक्स दे आर स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कैसे उनको आर्टिकुलेट या उच्चारण किया जा रहा है, या फिर उनका जो उच्चारण का स्थान है उसके अनुसार हम कॉन्सोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था स्वर या वॉवल साउंड्स वो होते हैं जो बिना किसी व्यवधान, बिना किसी रुकावट के आर्टिकुलेट किए जाते हैं या प्रोनाउंस किए जाते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, कौन से माउथ ऑर्गन्स इसके आर्टिकुलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम कॉन्सोनेंट्स को लेबियल, लेबियोडेंटल, डेंटल, एल्वियोलर, एल्वियोलर रिज जो दांतों से का अंदरूनी हिस्सा है दैट इज एल्वियोलर रिज, पोस्ट एल्वियोलर, रेट्रोफ्लेक्स, पैलेटल, वीलर या लेरिंजियल में हम इनको डिवाइड करते हैं। खैर आपको इन बारीकियों में न जाते हुए इन कॉन्सोनेंट्स को जानना और सही तरीके से उच्चारण करना इनका आवश्यक है। जो कॉन्सोनेंट्स हिंदी के कॉन्सोनेंट्स से मिलते जुलते हैं उसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हिंदी में नहीं है
या हिंदी भाषा से भिन्न है, हमारी मातृभाषा से भिन्न है, उनमें स्टूडेंट्स को नॉर्मली प्रॉब्लम आती है। ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की दृष्टि से इनको वॉवल्स को बांटने की कोशिश की गई है। बायलेबियल मतलब जहां दोनों लिप्स के फंक्शन से या दोनों लिप्स का रोल होता है उसमें प्रोनाउंसिएशन में, जैसे प, ब, म और व। लेबियोडेंटल मीन्स लिप्स एंड टीथ, dental means teeth, alveolar means behind the teeth, then palatal means palate या तालू, and velar मतलब पैलेट के अंदर से और मुख गुहा के अंदर से, का क ग स, एंड ग्लॉटल मतलब और अंतर स्थान जो हम कहेंगे, या और अंदर से ग्लॉटिस से ये निकलते ह ह। तो हिंदी में तो ये विन्यास जो है वो बड़ा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक है। इंग्लिश में आपको ये अल्फाबेट में देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन फोनेटिकली इंग्लिश के साउंड्स को भी इस तरीके से उनका अरेंजमेंट या विन्यास हम देख सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, 25 कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में। देयर आर 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स, जिसमें से 6 स्टॉप्स हैं। स्टॉप्स मतलब जिसमें आप जो ब्रीद आउट कर रहे हैं उस एयर को बिल्कुल रोक कर और फिर बाहर निकालते हैं, पूरी तरह से रोक कर। कहीं ना कहीं जो माउथ ऑर्गन्स हैं वो उसको पूरी तरह से उसमें व्यवधान उत्पन्न करके और फिर से छोड़ते हैं, जैसे प, ब, क, च। तो इस तरह से 6 जो है वो प्लोजिव्स हैं या स्टॉप्स कहलाते हैं। 2 एफ्रिकेट्स हैं, 9 फ्रिकेटिव्स हैं जो घर्षण के साथ आप अपनी एक्सहेल करते हैं या सांस छोड़ते हैं। 4 नेजल्स हैं जो नेजल कैविटी की मदद से बोले जाते हैं। 2 लिक्विड्स हैं और 2 सेमी वॉवल्स या ग्लाइड्स हैं। सो लेट अस टेक द कॉन्सोनेंट्स इंडिविजुअली। और जो हिंदी से मिलते जुलते हैं उसमें हमें ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो डिफरेंट है, हिंदी से भिन्न है, उनको आप थोड़ा ध्यान से सुने और सीखें। These are stop sounds. This is p sound. It is similar to the p sound of Hindi. This is b sound, which is similar to the b sound of Hindi. So p as in pet, tap, apart, post, repeat. B as in bat, hub, barber, butter, and cab. Now, per in English is a little aspirated. इसमें थोड़ा सा ह मिल के उच्चारण आपको सुनने के लिए मिलेगा नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स में। तो इट इज नॉट पेट, इट इज पेट। इट्स नॉट पोस्ट, इट्स पोस्ट। So this p sound is aspirated in English. It is not p exactly, लेकिन p और फ के बीच का साउंड आपको सुनने को मिलता है when you say pet, pan, apart. So this is p and b sound in English. This is t and d sound in English. These are also stops. इसमें भी आप अपनी सांस को बिल्कुल थोड़ा सा रोक कर और फिर छोड़ते हैं। सो ट एंड ड। इसमें आप दांतों के पीछे का जो रीजन है वो यूज होता है, ट और ड। ये हिंदी के ट और ड जैसे ना होकर थोड़े से एस्पिरेटेड है। एस्पिरेटेड का मतलब इसमें थोड़ा सा ह साउंड मिला हुआ है, ह। तो जब आप ट कहते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ट। इन इंग्लिश इट इज ट। सो टैप, टाइम, पेट, अटैक एंड टीच। इसी तरह से जो इंग्लिश का ड साउंड है वो हिंदी का ड न होकर ड एज इन डेट, read, adept and glad. The next stop sounds or plosives we say
is k, k, and this is g. So this is similar to the k sound in Hindi, and this is similar to the g sound in Hindi. The only thing is k in English is a little soft. We say when we say CASE, we say it's case. So it is something between ka and kha of Hindi. Case, king, tank, hawker, and scholar. G sound. It is similar to G sound in Hindi, so you will have no difficulty in pronouncing this sound. It is pronounced in the words gain, bag, begin, and argue. Then you have the fricatives. This is the th sound as in thin, athlete, myth, thank, therapy, and think. So this sound represented by this symbol is th sound. These sounds are articulated with the help of tongue and teeth. So they are dental. Th, th and the. Th and the. These are dental sounds. The as in this, bathe, weather, although, and smooth. So this th sound was similar to th sound of Hindi, and this is the sound which is similar to the sound of Hindi. ह is glottal. ये अंदर से आ रहा है ह, and it is also known as semi-vowel. So her sound as in help, behind, higher, here, ahead, and help. The other fricatives are s, z, sh, and j. S, z, sh, and j. So the manner of articulation of these sounds is similar. So they are called fricatives. S sound is similar to the S sound of Hindi, as in soft, assign, mess, recess, recess, and assess. This is Z sound. Z sound, it's not there in Hindi, it's borrowed in Hindi from other languages. So it is Z sound as in zoo, zenith, dozen, nose, rose, zeal. This is sh sound, which is similar to the sh sound of Hindi. It is sharp, cash, nation, share, and push. Then this is j sound, which is not there at all in Hindi. It is vision, occasion, azure, and pleasure. So these were s sound, z sound, as we write z with a dot beneath, then sh sound and j sound. Then you have these two sounds, ch,
ch as in Hindi and j sound as in Hindi. So it is cheap, hatch, picture, jump, judge, ajar, adjourn, giant, jam, jacket, and June. So ch and j sounds. Then these sounds are similar to the sounds in Hindi and they are nasal sounds. You cannot articulate these sounds if you close your nasal cavity. If you close your nose, you will not be able to pronounce these sounds. So they are nasal consonants. This is m, similar to m in Hindi. This is n, similar to n in Hindi. M sound as in map, hymn, calm, common. N sound as in not, tin, canal. Now this is nya sound, which is not there in Hindi. Nya. So the pronunciation of this sound is seen in the words canyon, onion, and banyan. So it is somewhat like uh, n and y mixed together. Nya sound. This is sound like you write in Hindi, but this is shorter than this. And when it is in terminal position, you see it's very short. Sing. So it's just sound. Finger. It's in the middle. You can listen this sound. Finger. Singing. So in the middle and the terminal or in the end. Singing. So sound. So these four are nasal sounds or nasal consonants in English. Then you have l sound and r sound. L sound is equivalent to the l sound of Hindi. Large, dull, flame, bottle, lonely, and tell. This is r sound, which is similar to the r sound of Hindi, as in wet, jar, parrot, rain, and carry. Now, this r sound is not pronounced when r is in the terminal position or is in the end position, unless there is a continuity of this sound in the other vowel. तो आर जब भी लास्ट में होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, जब उसके बाद कोई वाउल है तो फिर ये र साउंड वर्ड के जो लास्ट में होता है ये कैरी ओवर हो जाता है. लाइक आई हैव अ कार, आई विल नॉट से आई हैव अ कार. ओके, सो आई हैव अ कार, my car is not working. So when I say my car is not working, so the r sound is carried over with e sound of is. My car is not working. Then r you can listen or that sound can be heard. So you can hear that sound. Otherwise, when r is in terminal position of the word and the sentence, then you will not hear this sound. Then this is the y sound. This is the y sound, and it is similar to the y sound of Hindi, as in you, yes, yellow, yesterday, young. Then this is the w sound, but this sound in English, it begins with rounded lips. So I will not write an equivalent of this sound because in Hindi it is v. Here this sound is v. So you have to begin this sound with rounded lips. So it is v sound
as in wall, wow, cow, wonder, wind, where, want, watch, and what. So all these words have w sound that begins with rounded lips. So these were y, y, and w sound. Don't get confused with the symbol J. It represents y sound, not j. So there are 25 consonants in English. We have studied 6 stops or plosives, 2 affricates, 9 fricatives, 4 nasals, 2 liquids, and 2 glides or semivowels. So you don't have to bother about the names or classification of these consonants. When you are not able to make a sound, then this information will help you that how you can articulate the sound. जब आप कोई साउंड उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, कोई कॉन्सोनेंट आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, तब ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन या जो उसका उच्चारण का स्थान है, ये आपको मदद करेगा कि उसको कैसे उच्चारण करना है. Okay. Otherwise, if you are able to pronounce the consonants correctly and if you have learned to pronounce the consonants correctly, then the classification it doesn't matter. So let us take the consonants individually. Let's revise. This is depending on the manner of articulation. These are plosives or stops. P, B, T, D, K, G. Again, P, B, T, D, K, and G. Now these are fricatives. F, V, Th, D, S, Z, Sh, J, and H. Ch and J. Ch and J. These are nasals. M, N, N, and N. N. This is L and R. Now this is Y. Y. I told you don't get confused with the symbol. It is Y and W with rounded lips. This is a quick revision of vowels and consonants. Total 44 sounds are there in English. This is E, long vowel, E as in read. E, this is a short vowel as in sit. U as in book. U as in to. Ear as in hear. A as in day. A as in men. As in America. Long vowel. As in word. O as in sort. Long vowel. O as in tour. Oi as in boy. O as in go. A as in cat. Short or the shortest. It is as in but. As in part. O as in not. Ear as in where. This is ear as in where. I as in my. Ow as in how. This is p. P sound as in pig. B sound as in bed. T sound as in time. D sound as in do. Ch sound as in church. J sound as in judge. K
as in kilo, k as in go, f as in five, v as in very, th as in think, d as in the, s as in six, z as in zoo, sh as in short, j as in casual, m as in milk, n as in no, n as in sing, h as in hello, l as in live, g as in read, w as in window, and y as in yes. So you have to see the difference in this v sound, as in very. It is pronounced or articulated with flat lips. V, 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 very, van, and this v sound. So you can pronounce this with rounded lips. V, v. So you have two variations of v. V with flat lips and V as with rounded lips. Then there are three variations of J, J, Z and J. J, Z and J. J as in judge. J as in judge and Z as in zoo. J and Z and J as in casual. So these three variations of J. In Hindi you have J, but in English you have J as in judge, Z as in zoo, and casual. This is the J sound. Similarly, you have ma and na, which are similar to Hindi, but you have this nya sound as in onion, and you also have n sound as in sing. So these are the sounds. Most of the symbols are similar to the alphabet letter. So it is not difficult, or it is very easy to remember. Pa sound because it is represented by P, ba sound it's represented by B, cha sound it's represented by T, and ja sound it's represented by D. It's very obvious. The symbols which are different, you have to pay attention to those, like cha sound, ja sound, then theta sound, theta symbol for th, and this symbol for the. Similarly, j sound with this symbol, then sh sound with this symbol. So normally the symbols, they are familiar symbols to you, but when the symbols are unfamiliar or a little strange, then you have to remember them. So this is all about consonants. Now let's have some practice. These are the phonetic transcriptions. That means in the dictionary, if you look for the pronunciation, in the pronunciation dictionary like Collins-Coggill or Advanced Learners Dictionary or Dictionary Daniel Jones, then you will see the representation, the phonetic representations or phonemic transcriptions of words like this. So car will be written in slanting or oblique lines like this. I told you terminal R is not pronounced, so it is car, car. The pronunciation of this word is car. Then certainly. So there is a long vowel here in after sir. So sir, t, then sound, and li. So it's certainly. Next, exactly. So it is I sound, not exactly, not a sound. It is I sound. So I, then z sound as in zoo. Then a sound, exact,
then k sound, and t sound, little t sound, and then li. So exactly it's written like this. So when you see the phonemic transcription, you know the exact pronunciation of the word. Then you will not get confused with the sounds or with the pronunciation. See, ma sound, this is read as message, message. So it's not written read as message, or you can mispronounce it, or when you change the spelling it will become massage, but here it is message. So message, and this is the j sound. Represented in the end is the j sound. So message. Next is headache. This is a sound, head and ache. This is a diphthong. So headache, headache. Then it is scheduled. So this is the a sound. This is the long u sound, and this is the y sound. So it is scheduled, scheduled. And this is don apostrophe t is read as, this is the o sound. So it is don't, don't. This is idea. It is I sound, diphthong, and ear sound. So idea, idea. It's not idea, it is idea. Then it's corridor, corridor. So it is o sound here, and it's long o sound here. So it's corridor. Then this is a sound, then I, vowel, diphthong, I. So it is survive, not survive, it is survive. R is, there is no R sound here in the phonemic transcription. So when it is written, you don't write, there is nowhere R or R sound is there. So you have to pronounce it as survive, survive. Then this is O, O. So it is a o diphthong. O. So O. Then this is the same sound O here in okay. Okay. So it is A and O. So O in the beginning. Okay. Okay. So in this way, you have to learn, you can learn the correct pronunciations, correct and exact pronunciations of the word. Now this is an exercise for you. You have to recognize these vowels and consonants, uh, identify them, इनको पहचानिए और इनको pronounce करिए. इस left side में vowels हैं और right side में consonants हैं. Look at them, pronounce, and the related vowels and related consonants are written together so that you can distinguish between the two or three variations of the same sound. Like here you have y, here you have j, j sound, j, and here you have z sound. So in this way, sh and s. Students normally have problem with this sh and s. कई students sh को भी s का उच्चारण करते हैं. So this awareness of sounds will help you in improving your pronunciations, and please find out your weaknesses with the help of your teachers. अपने teachers की मदद से आप अपनी weaknesses पता करिए कि कौन से sounds आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं और उनका सही तरीका क्या है उच्चारण करने का, उसको प्रैक्टिस करिए so that at least you are able to speak correctly and you are not misunderstood. जब भी आप बोलें तो आपको कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, या जो आप कहना चाह रहे हैं वही सुनने वाला समझ पाए. So for that it's very important and it's necessary that we speak correctly, we read correctly. So practice a lot of loud reading and practice a lot of speaking. And practice, most important is practice listening, lot of listening. And whenever you're listening, listen to the standard Indian English or at least the neutral accents.
तो इंडियन इंग्लिश में आपको सुनने के लिए आप दूरदर्शन के जो भी चैनल्स हैं उसमें इंग्लिश के जो भी प्रोग्राम या कमेंट्रीज आती हैं वो आप सुन सकते हैं। डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या जो भी आपके पसंद का चैनल है, कोई भी स्पोर्ट्स चैनल आप ले सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश में कमेंट्रीज या इंग्लिश में डिस्कशंस या डॉक्यूमेंट्रीज ब्रॉडकास्ट हो रही हैं। सो प्लीज मेक इट अ हैबिट to listen for at least 15 to 20 minutes every day and pay attention to the sounds that you have learned uh, through these through this module, and try to make the sounds for yourself. Try to speak the words in the similar way, in a similar way, because इस pronunciation के बाद फिर intonation भी important है कि हम किस word पे ज़्यादा stress दे रहे हैं, कहाँ pause ले रहे हैं, कहाँ हम जोर से बोल रहे हैं और किस word को हम stress कर रहे हैं, किस तरीके से stress कर रहे हैं. So with the knowledge of sounds, this is only a part of pronunciation. इसका next part जो है that is intonation. So paying attention to punctuation, comma, full stop, comma पे आपको थोड़ी देर रुकना है, full stop पे थोड़ी सी और देर रुकना है, ठीक है. जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, राइजिंग टोन होनी चाहिए. When you are answering, किस वर्ड को आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं या वर्ब को एम्फेसाइज कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक हमारी टोन चेंज हो जाती है. तो pronunciations along with the intonation, that makes a complete set of having correct pronunciations and speaking correctly. So this is the practice exercise. These are the words given. You have to आइडेंटिफाई द साउंड्स. इसमें साउंड कौन सा आएगा आपको आइडेंटिफाई करने, साउंड्स अलग अलग लिखने हैं एंड देन ट्राई टू ट्रांसक्राइब द वर्ड्स. फिर उनको आप ट्रांसक्राइब करने की कोशिश कीजिए. जैसे जेनिथ, जेनिथ, तो जेनिथ में ज साउंड है, ए साउंड है, न साउंड है, ई साउंड है. अब कौन सा है, वेदर इट इज अ लॉन्ग और शॉर्ट, ये आपको पहचानना है. और फिर साउंड है. सो इस तरह से इन साउंड्स को पहचानिए और फिर इस वर्ड को कंपोज करने की कोशिश कीजिए. ट्रांसक्राइब इट, उसको फोनेटिक सिंबल्स के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए. अगर आप ये वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपको थोड़ी बहुत गलतियां होंगी बट यू कैन चेक इट. इसका मतलब है आपको थोड़ी सी अवेयरनेस साउंड्स की आ गई. सो जेनिथ, इंग्लिश, रिलेशन, लैंग्वेज, नॉलेज, social, thanks, receive, revision, and identity. I'm repeating: zenith, English, relation, language, knowledge, social, thanks, receive, revision, identity. So the answers are here for you. First you try and then you can tally your answers. That's all about vowels and consonants. You can practice speaking loud these words to have a clarity of the sounds. This is fast, vast, and worst. Judge, jug, and jury. Zoom, zebra, and zeal with z sound. Occasion and revision with j sound. Mission and vision with j sound. Decision with j sound. Church, search, and shark. So ch, s, and sh. Whale, fail, and whale. Hot, what, and vase. Sign, shine, and chimes. Bottle, singer, and onion. Bottle, singer, and onion. Wine, water, wine, and fine. So this was the pronunciation drill. You practice reading these words loudly 5 to 6 times to get the feel of the sounds correctly. Thank you, and in the next lecture we will begin with articles and determiners. Thank you.